मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पर्सनल कॉलेज रांची। मैं आप लोगों को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोर कोर्स C13 का गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। आप लोग इसे अपने कॉपी में उतारें और स्टडी करें इस गेस्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस इन ब्रीफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, explain the meaning of auditing and write its scope and importance. Or accountancy is necessity while auditing is luxury. Inverted comma. Do you agree with statement? Question mark. Explain. Or inverted comma. Auditing begins where accountancy ends. Full stop. Discuss the statement. Question. Full stop. How does accountancy differ from auditing? Question mark. Question number 3, what is auditing? Question mark. Question number 3, what is auditing? Question mark है. Explain its objects. इसके उद्देश्य को बताइए. Question number 4, what are the different kinds of audit? Question mark. State the merits and demerits of each. Next question और में है, what is continuous audit? Question mark. Discuss its merits and demerits. Question number 5, what is audit program? Question number 5, what is audit program? Question mark. How it is prepared? Question mark. Discuss its advantages and disadvantages. Or what is audit notebook? Question mark. What are its contents? Please stop. Discuss its merits and demerits in brief. एक बार रिवाइज में दोबारा बोल रहा हूँ. What is audit notebook? Question mark. What are its contents? Question mark. Describe its merits and demerits in brief. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इंटरनल चेक सिस्टम भी कह सकते हैं. व्हाट इज इंटरनल चेक सिस्टम? क्वेश्चन मार्क. डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. क्वेश्चन नंबर 7, वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. एक्सप्लेन. और कुछ अथवा में है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स? क्वेश्चन मार्क. हाउ फार इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल एज रिगार्ड देयर वेरिफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 8, describe the provisions of the Companies Act 2013 with regard to the qualification and disqualification of a company auditor. Or explain the provisions of the Companies Act 2013 for the appointment of a company auditor. Question number 9, what is cost audit, tax audit and management audit? Full stop. Question mark. Describe the objects of cost audit and advantages. यहाँ क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, उसको वर्ड जहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसीलिए मैंने व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क लिखना छूट गया है. डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड एडवांटेजेस, है ना. और में है, डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन रिगार्ड टू द ऑडिट ऑफ कॉस्ट ऑडिट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EDP सिस्टम और explain the various methods of audit the computerized accounts. Next question number 11, what is the meaning of corporate governance? Question mark. How it has been evaluated? Or explain the principles of corporate governance. Question number 12, what is the principle for periodic disclosures and for corporate governance? What is the principle of for periodic disclosures and for corporate governance? Question mark. Describe in detail. Next question. Question number 13. What are the major problems of corporate governance? Question mark. Explain. Question number 14. Explain the various environmental aspects of CSR or describe the provisions of CSR and Company Act 2013 and explain the composition of CSR committees. Question number 15. What is business ethics? Question mark. Differentiate between CSR and business ethics. Question number 16, what is auditor report? Question mark. What are its contents? Question mark. Question number 17, discuss the rights and duties of a company auditor. Thank you to all students.